Assalamu alaikum. In this video we will discuss the skeletal muscle relaxants, and this is just introductory video in which we will discuss mechanism of action. And the actual thing which you must be knowing is what are the sites at which the skeletal muscle relaxants can act. So the multiple sites 1 to 5 we will discuss one by one diagrammatically, and the mechanism of actions. Obviously, when you will see the sites of action, you will memorize the mechanism of actions of the individual drugs. In this we are only discussing the intro. In the upcoming videos we will discuss the individual drugs one by one, and in this we also discuss classification and what are the uses, why we need skeletal muscle relaxants. Now first of all, we have the classification. We can classify it multiple modes, like peripherally acting, centrally acting. Peripherally acting, obviously there will be neuromuscular blocking agents, and centrally acting, these are spasmolytics which will act on the CNS. Peripherally acting में दो तरह की डिवीजन्स हैं, एक है depolarizing और एक है नॉन depolarizing and depolarizing. जो नॉन depolarizing है, I have a really awesome mnemonic for memorizing all these names of non-depolarizing drugs. Trap her and go Valentine. T for D-tubocurarine, R for ricuronium, A for atracurium, P for pipecuronium, and the next P is for pancuronium. And here is the go, Go for gentacuronium, and Valentine, vicuronium. So by this mnemonic, trap, her, go Valentine, you can remember all the names of non-depolarizing agents. In this video we are only discussing the names of the drugs. In the upcoming we will discuss one by one all the drugs and their mechanism of action, adverse effects and everything. The depolarizing, the only depolarizing drug which is clinically used nowadays is succinylcholine. All the other drugs other than succinylcholine are non-depolarizing, and the centrally acting are baclofen, diazepam and tizanidine. Now all the sites of actions, the different sites at which neuromuscular blocking agent can act, starting from the brain. The command for the skeletal muscle contraction comes from the brain, so we will start from the brain. Starting from the brain, these are three drugs: baclofen, diazepam, tizanidine. We will discuss these three drugs one by one, but you must need to remember that these drugs are acting centrally on the brain. Now these will inhibit on the brain. Diazepam GABA agonist है, so inhibitory जो mechanism है उसको potentiate करता है, GABA A पे act करता है, baclofen GABA B पे act करेगा, ये भी GABA का agonist है. So in this way these are inhibiting the skeletal muscle contraction. Now coming downward onto the presynaptic terminal, here we have calcium stored in the sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum के specific receptors होते हैं, ryanodine receptors. उन ryanodine receptors के ऊपर अगर ये act करें, उन्हें inhibit कर दें, तो calcium release नहीं होगा. तो calcium release नहीं होगा तो acetylcholine का release नहीं होगा, because calcium is necessary for the release of acetylcholine. So when this receptor or this ryanodine receptor is inhibited on the sarcoplasmic reticulum, which is actually inhibited by dantrolene. So dantrolene is acting here. तो कैल्शियम को इनहिबिट कर दोगे तो आप एक्चुअली कैल्शियम का रिलीज़ को इनहिबिट करने से एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ इनहिबिट होगा. सो दिस इज हाउ you can also inhibit this. So this was first on the brain, and second one is the calcium channels, and the third one is release of the acetylcholine. acetylcholine के अगर रिलीज़ को इनहिबिट कर दो, जो कि हम इनमें डिस्कस करेंगे नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स में, वो इसके रिलीज़ को इनहिबिट करते हैं, तो acetylcholine नहीं होगा तो आगे स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी. या फिर जब ये रिसेप्टर के ऊपर लगती है acetylcholine, तो इसके रिसेप्टर को जाके एंटागोनाइज कर दो, तभी सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा, तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी. और दूसरा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स का, ये ऐसे करते हैं कि रिसेप्टर जो है उसके अंदर घुस जाते हैं और उसको टोटली अंदर ही जाके ब्लॉक कर देते हैं, विच मीन्स कि एंटर्स द पोर ऑफ द आयन चैनल्स, एंड व्हेन दे एंटर द पोर ऑफ द आयन चैनल दे कम्प्लीटली ब्लॉक द आयन चैनल, और फिर इसको आप नियोस्टिग्मिन दे के भी इनहिबिट नहीं कर पाते. तो इतना इसको स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ पे आ जाता है. उसके बाद ये हो गए आपके 4. बाकी आपके पास एसिटाइलकोलिन को आप एगोनिस्ट दे के भी, जो कि डीपोलराइजिंग एक्शन है. डीपोलराइजिंग एक्शन का क्या मतलब है? जब आप सक्सिनलकोलिन देते हो तो सक्सिनलकोलिन इसको इसी के तौर पे एक्ट करती है आके, और यहाँ पे